Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Nerula, and today we're going to talk about some another activities that you can conduct in your classes to integrate art, to integrate other subjects, and the topic is roots and stems. So this is a topic for the middle school students from 6 to 8. So what all activities you can conduct in your classes? For that, my lovely educators, here you go. So if I talk about different sorts of activities that you can conduct, roots and stems, the unsung heroes of the plant world, discover their diversity and crucial role in the ecosystem. इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. जब प्लांट्स की बात आ रही है तो उसमें हम रोल जब डिफाइन करते हैं, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पोर्टेंट. तो उनके रोल की बात करेंगे, किस तरीके की एक्टिविटीज हम करा सकते हैं. हियर यू गो. The roots and the stems of the plants are often overlooked, but they play a crucial role in the survival and the growth of every plant. From anchoring the plant in the soil, उसको proper fix रखने से लेकर to transporting the nutrients and water, these unsung heroes are essential for the health and vitality of the ecosystem. By exploring the diversity of the roots and the stems, we can better understand the intricate web of life that sustains us all. Let's embrace the power of these vital plant structures and work towards a more sustainable and harmonious world. Remember, every plant is unique, and by studying and protecting them, we can ensure the survival of these essential components of the ecosystem for generations to come. So, very important to know about the importance of each part of the plant. Leaves हैं अगर वो kitchen of the plants हैं, right? तो अब हम यहाँ पर focus कर रहे हैं stem and roots के ऊपर. लास्ट हमने कुछ वीडियो में डिस्कस किया डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर. वी टॉक्ड अबाउट फ्लावर्स एंड लीव्स. इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे स्टेम एंड रूट्स के ऊपर. आसपास में जहां पर भी कुछ प्लांट्स लगे हैं उनकी कोई रूट्स निकाल कर वहां पे आप बच्चों को दे सकते हैं, उसका एनालिसिस करके व्हाट सॉर्ट ऑफ रूट्स आर देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेम्स आर देयर. सो अकॉर्डिंगली वो उनको पूरा देख के कि किस तरीके की रूट की स्ट्रक्चर है, they can know about that particular root structure or the stem. इसके अलावा provide your student with a variety of roots, vegetables and have them taste and describe each one. Discuss the different types of root vegetables and how they are used in cooking. आप इसमें भी tasting sensory activity करा सकते हैं. Provide them with the radish, carrot, turnip or maybe other like potato. Let them taste, let them share whether it's a stem, whether it's a root, किस तरीके से modified roots हैं, modified stems हैं. Let them differentiate and let them understand. Okay, तो इसमें sensory activity भी होगी and they'll understand also, real life learning होगी. And then stem and root cross section observation आप lab में जाकर Microsoft स्कोप के थ्रू करा सकते हैं. आपके पास ऑलरेडी रेडी टू यूज आपके जो परमानेंट स्लाइड्स हैं उसको दिखाकर यू कैन शो इट टू देम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भी वो अपनी स्लाइड्स नहीं बनाते हैं. तो 6 to 8 दे कैन ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड्स की रूट सेक्शन या स्टेम का सेक्शन अंदर से कैसे दिखाई देता है. तो दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डन. स्टेम एंड रूट अडेप्टेशन मैचअप कर सकते हैं. अगेन स्टेम एंड रूट मैचअप, provide your students with a variety of stems and roots and have them match the structure to their corresponding environments. Discuss how stems and roots they are adapted to different environments like aquatic है, forest है, arid है, right? So आप उसको cards के through भी ये activity करवा सकते हैं. Now root growth observation. Have your students plant seeds in the transparent cups. जो हम प्लांट ग्रो करने की एक्टिविटी कराते हैं, सीड ग्रो करो, जर्मिनेट करो एंड देन प्लांट के डिफरेंट स्टेप्स को देखो कैसे वो ग्रो करता है फ्रॉम अ सीड टू अ टाइनी प्लांट, राइट? उसमें रेडिकल और प्लोम्यूल देखते हैं, उसके बाद में रूट और शूट जब उसका निकलता है तो वो कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं. अगर हम इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, ट्रांसपेरेंट कप में करते हैं with the soil and observe the growth of the roots over time, that would be a better option instead of doing in a opaque cup or maybe any other object. So discuss the different stages of the root growth and how roots absorb water and nutrients from the soil, right? So this activity can be done. So आप पहले वाली activity में सिर्फ you have to make this change, like replace that opaque cup with the transparent one. Provide your students, now this is the STEM strength experiment. Provide your students with different materials, maybe straws, pipes, cleaners,
toothpick, etc., and have them design and build a structure to test the strength of the stems. Discuss how stems provide support and stability for the plants. इस तरीके की कोई एक्टिविटी करा सकते हैं जिसमें कि वो देखेंगे कि जो आपके प्लांट है उनकी स्टेम है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है अलग अलग प्लांट्स के लिए, कि उसका पूरा प्रॉपर उसकी खड़े करने के लिए प्लांट को टू लेट इट स्टैंड, उसका वेट बेयर करने के लिए उसकी जो स्टेम है कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन रूट एंड स्टेम ऑटोनॉमी. आर्ट प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो बी डन. The students can create a mixed media art project showing the different structures of the roots and the stem and discuss the different parts of the roots and the stem, how they are important for the plant function. उसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, गार्डन में जाकर कोई रूट्स या स्टेम्स कोई हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, एंड दे कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स. एंड स्टेम कटिंग प्रोपिगेशन. हैव योर स्टूडेंट्स प्रोपिगेट प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग्स. बहुत सारे प्लांट्स जैसे हम स्टेम कटिंग उसकी करके वहां से प्लांट ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट है या एनी अदर सच प्लांट्स. तो उनको खुद ग्रो करने के लिए दे विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोपिगेशन, हाउ योर स्टूडेंट्स दे प्रोपिगेट plants from stem cuttings by rooting them in the water or in the soil. ठीक है, मनी प्लांट हम घर में भी लगाते हैं, ग्लास में, बॉटल में लगा सकते हैं, या बाहर गमले के अंदर, पॉट के अंदर, मिट्टी में वहां पर लगा सकते हैं, वास के अंदर लगा सकते हैं. डिस्कस हाउ स्टेम कटिंग्स कैन बी यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इन हॉर्टिकल्चर. सो उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, रूट माइक्रोब ऑब्जर्वेशन. हैव योर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द कंपेयर द माइक्रोब्स फाउंड इन हेल्दी एंड डिजीज रूट्स, राइट. ये आप लैब में उनको एक्टिविटी करा सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोप एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स जो जो कि रूट्स में रहते हैं, राइट. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. हाउ डू दे अफेक्ट द प्लांट हेल्थ. कैसे उसको अफेक्ट करते हैं, वो प्लांट की हेल्प करते हैं ग्रोथ में, राइट. जैसे राइबोसोम्स हैं या कुछ और हैं, या फिर वो उसमें ऊपर एडवर्स इफेक्ट करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली लेट देम रिसर्च अबाउट इट. नाउ स्टेम एंड रूट बायोमैकेनिक स्टडी. हैव योर स्टूडेंट्स रिसर्च द प्रेजेंट and present on the biomechanics of the stems and the roots, including their flexibility, strength, and resilience, and discuss the different ways that stems and roots have evolved to withstand different environmental pressures. Environmental pressures कितने होते हैं, environmental में changes होती हैं, या different factors हैं, wind है, या storm है, rain है, like any other change of climate is there. तो उसको किस तरीके से ये roots या stems जो हैं वो withstand करते हैं, so that the plant can survive in such conditions also. So that can also be studied in the class. Root and stem food experiment can be done. Have your students cook and taste different parts of the root and stem. जैसे कि मैंने पहले बताया है, carrots है, sweet potatoes, celery, and other stems and the roots they can be used. And आप होम साइंस क्लब में भी कलरी एक्टिविटी भी करा सकते हैं, घर में भी करी जा सकती है. अकॉर्डिंगली दे कैन observe, they can share the inferences also. Now, root viewer, provide your student with the clear plastic container, paper towel, and the bean seeds. Have them place the bean seeds between the paper towel and then insert the paper towel into the container. Add water to the container and have your students observe the roots grow over time. किस तरीके से वो उसमें से roots grow होती हैं, तो ये उसको observe कर सकते हैं, right. And provide your students with a large piece of paper and a pencil. root की tracing, जैसे हमने पहले leaf की rubbing की है, तो यहाँ रूट की ट्रेसिंग कर सकते हैं. हैव देम ट्रेस द आउटलाइन, राइट, एंड देन दे विल बी एबल टू ड्रॉ कि कैसी उसकी आउटलाइन हो रही है, हैंड है या फिंगर्स हैं, पाम है, रूट का कैसे है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड एंड लेबल कर सकते हैं. रूट वर्ड मैचअप कर सकते हैं. प्रोवाइड योर स्टूडेंट विद द लिस्ट ऑफ द रूट रिलेटेड वर्ड्स and have them match the words to the definitions. Discuss the different meaning of the words and how they are related to the roots. Now, this is the language related activity. I mean, root की बात कर रहे हैं और यहाँ पे root हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे root words है, right? वो root word से किस तरीके से उस root word को use करके new words बनाए जा रहे हैं. तो ये this is activity कि आप इस तरीके से इसको just language के साथ integrate कर सकते हैं. Now, next is stem and root collage. The children can make, have your students collect different kinds of stems and roots available in the garden and present a collage. Stem bending experiment can be done. Provide your students with different materials. ये सारे करके आप different जैसे मैंने पहले बताया, पाइप क्लीनर है, straws है, rubber bands हैं, वो चेक करेंगे कि stem की strength कितनी है, right? So next is root and stem sorting game. Provide your students with a variety of stem and root pictures and have them sort the pictures into the two groups.
स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो आप अपने जो कार्ड्स हैं, डेक ऑफ कार्ड्स ले लीजिए, उनो कार्ड्स ले लीजिए, पुराने कोई भी कार्ड है, उसमें से पिक्चर पेस्ट करके उसको लैमिनेट कर लीजिए एंड लेट योर लर्निंग टीचिंग मटेरियल रेडी। लेट देम सॉर्ट इट आउट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ना। रूट वेजिटेबल गार्डन भी बना सकते हैं। हैव योर स्टूडेंट्स प्लांट एंड केयर फॉर द रूट वेजिटेबल गार्डन। कैरेट्स हैं, रेडिशेस हैं, so the same can be done. So a few more activities. Stem and root story time can be done. The students, they can come up with beautiful stories related to roots and stems. Read a book about stems and roots on your students, for your students, such as Seed to the Plant by Gail Gibbons, and there are a number of another books available. You can check online. Kindle editions are available. Free books are available. You can read the same in the class, or you may ask your children to go and explore the e-library present in your school, or otherwise the books are available, magazines are available. They can discuss the same. Root and stem music. Now sing a song about stems and roots, right? Maybe the root song, maybe the stem song, and have fun teaching. Discuss the different parts of the plant and how do they work. So you are integrating music also, you are integrating art. Obviously, music is a form of art only. I mean, paintings, drawing, the visual art, performing art, right? So the same can be done. Now, stem and root obstacle course. Create an obstacle course where using stem and root related materials, maybe hula hoops, pool noodles, have your students navigate these obstacle course while learning about the different parts of the plant. अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्स्टेकल रेस है, रिले रेस है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है, जिसमें कि ऑब्स्टेकल्स आपने किस चीज के बनाए हैं, विद द रूट्स एंड स्टेम्स, उसके आपने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं. So the same can also be done as an activity. So stems hold high, roots down below. Together they make a plant grow, nourished by soil and sun's rays, a beautiful creation in so many ways. So, my dear educators, stay tuned to Mentoring the Mentors if you want to know more about such activities and want to make your classes engaging, enriching, and exciting. Like, subscribe, and share the videos, and stay blessed. Thank you. Have a nice day.